अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आबनाए हुर्मस में ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम रकवाने का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। मार्को रूबियो ने NBC न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। उन्होंने बावर कराया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोककर सिफारतकारी को मौका दिया गया, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया। मार्को रूबियो ने तनाज़े के हल में सुस्त रवि की वजह ईरानी क़यादत में इख्तिलाफ़ात को करार दिया और बावर कराया कि वाशिंगटन अब भी मसले का सिफारती हल चाहता है, लेकिन ईरान के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पेशरफ्त को सुस्त कर रहे हैं। Project Freedom return, are we going to start bombing Iran again? The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. We still prefer, the president strongly prefers, a diplomatic solution. We're going to continue to try to work on one. We've given this regime in Iran every opportunity to reach one. But part of the problem we're having, frankly, is they're divided internally. Within Iran, they're divided internally, and it makes it hard to get counter proposals from them.